Good morning, students. I hope you all are fine. Today we will start with a new topic, that is structure of government budget. But सबका मानना है that this is one of the toughest topic, but it is an easier topic. I'll tell you how. I'll give you the concept. Let us first understand जो हमने मीनिंग पढ़ा था गवर्नमेंट बजट का. It included majorly two things, that is receipts and expenditure. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. The very first component is receipts and the other is expenditure. Now receipts means that basically गवर्नमेंट विल रिसीव मनी, तो हम बोलेंगे कि रिसीट्स में मनी आएगा. एंड इन एक्सपेंडिचर वी नो दैट इट वुड बी एन आउटगोइंग ऑफ मनी. इट मींस पैसा जाएगा, पैसा जाएगा. लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप. इफ यू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कांसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. द वेरी फर्स्ट इज रिसीट्स, हम कह रहे हैं मनी आएगा. सेकंड इज एक्सपेंडिचर, मनी जाएगा. नाउ सी, the structure of government budget includes majorly two components. The very first is budget receipts, second is budget expenditure. Now budget is same, we have put in suffix it with receipts and expenditure, receipts and expenditure. Now what does budget receipts includes? It includes basically two things, that is revenue receipts, other is capital receipts. Now we have two major things, revenue and capital. Likewise in budget expenditure we have two things, revenue expenditure, capital expenditure. तो अब हमारे पास दो नई टर्म्स आई, दैट इज रेवेन्यू, अदर इज कैपिटल. तो रिसीट्स दो टाइप की होगी. नाउ अंडर रेवेन्यू रिसीट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, दैट देयर इज नो इफेक्ट or change in either assets or liabilities of the government. It means neither the assets or liability will increase or it will decrease. तो हम उसको क्या बोलते हैं, create और reduce, वो आगे करते हैं. In capital nature items what we see is that there will be a change there, yeah, it will be effective. It means increase or decrease in assets or liability status of the government. So either it is for receipts or it is for expenditure. For both the things it means revenue receipts and revenue expenditure वो होंगे. तो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स वो हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे गवर्नमेंट के इफेक्ट नहीं आएगा. एंड अंडर कैपिटल नेचर इधर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर देयर विल बी अ चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन ईदर एसेट स्टेटस और द लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. गेटिंग माय पॉइंट? हियर देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, हियर इट इज effect on asset or liability. So now we introduce new terms, that is create and reduce. It means when we say increase we would use the word create, when we say decrease we will use the word reduce. I repeat, for increase we use create and for decrease we use reduce. लेकिन ये हो गया कैपिटल नेचर में. What about the revenue nature? Under revenue nature we will use the word does not. What we will use is does not. It means does not create or does not reduce what, asset or liability. I repeat, does not create, does not reduce asset or liability. Now let us start with an example. See, the very first example we take is license fee. Now why it is been put under to revenue receipts? See, you have asked for a license, for example your driving license, your factory license, and you have paid the fees to the government and government has given you the license. Is there any change in asset or liability of the government? No. So understand my point. License fee is a receipt, it means money aayega. Now there is no change on the asset and liability status of the government. So what we will say, although the government has received it, but it neither creates asset nor reduces liability. हम बोलते हैं satisfies both conditions.
satisfies both conditions। तो इसमें क्या हुआ लाइसेंस फी में, गवर्नमेंट ने पैसा लिया लेकिन उसकी एसेट लायबिलिटी के ऊपर स्टेटस पे फर्क नहीं आया, तो वी वुड से इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। सो हियर कम्स द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इट। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स लायबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ द गवर्नमेंट इज गिविंग यू grants or giving scholarship to students. So again it is a nature of revenue. It means that there is no change in the asset or liability status. Now the very first is grants given or scholarship given. It means money जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जाएगा, but it is not affecting the asset or liability status. So see, it does not reduces liability and does not create assets, satisfies both. अब मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज समझाता हूं कि does not create, ये create हमें कैसे पता लगता है। Okay, see, for example, you are my friend and your name is Chintu. I have borrowed money from you, that is rupees 500. Now see, this is a liability for me to pay you back. So I have received it and there is a liability for me to pay back, and it will be an asset for you because you have given me loan. So loan given by you is a asset for you and a liability for me. When I will repay it, I have reduced my liability. I have reduced my liability and your assets have reduced. So understand my point कि जब किसी के पास पैसा आ रहा है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है। अगर वो लायबिलिटी क्रिएट होती है तो हम उसको डालेंगे कैपिटल नेचर में, एंड इफ लायबिलिटी इज नॉट क्रिएटेड हम उसको डालते हैं रेवेन्यू नेचर में। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल। इफ आई विल परचेज एन एसेट, इट मींस I have made an expenditure, so it will go into expenditure account, and it has created an asset for me. I have purchased a land, it has created a land for me. It means it has created an asset, so it would be entered into capital account. And if I have made disinvestment, I have sold a land, it means I have received money and it has reduced. What reduced? Asset. So it will go into capital expenditure account. तो समझिए आपको इजी वे में चलना है। If you are receiving money and if the liability is created, it will be entered into capital receipt. And if liability is not created, it will be entered into revenue receipt. Right? Again, if I have received money and it means I have purchased an asset, created an asset, so it will go into capital receipts. And if it is not creating an asset, it will go into revenue receipt, revenue expenditure. ठीक है जी, सॉरी रिसीट्स, राइट। तो समझो कि पैसे का क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसा आ रहा है रिसीट, पैसा जा रहा है एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, capital receipt. It is reducing an asset, capital receipt. It is not creating any asset or liability, तो revenue nature, right? So let us understand third one, capital receipts. I am receiving money, I have received money from government, right? तो अब government has received money for me. For example, so I am government and Chintu my friend is public. तो क्या हुआ, मैंने पैसा लिया, government has received money and it is a liability on the government to repay back, so it has created a liability. Or the government will receive money through disinvestment, it means it will reduce asset. So capital receipts are those which either creates liabilities or reduces assets, right? Now let us come to the fourth one, that is capital expenditure. Now see, money jayega, money will move out. Now why will it move out? For example, I have repaid the money, so it means repayment of loan. When I have repaid the loan, it means I have reduces my liabilities, right? Or I have purchased assets, it means it has created assets.
तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे आसान चीज समझना बेटे। क्या होता है, इफ यू आर रिसीविंग मनी इट विल बी एंटर्ड इनटू रिसीट्स कॉलम। इफ यू आर पेइंग मनी, द गवर्नमेंट इज पेइंग मनी, यू कंसिडर योरसेल्फ एज गवर्नमेंट, ठीक है, तो इट विल बी एंटर्ड इनटू एक्सपेंडिचर अकाउंट। इफ इट इज रिड्यूसिंग, नॉट रिड्यूसिंग, क्रिएटिंग, नॉन क्रिएटिंग एसेट और लायबिलिटी, उसके हिसाब से हम बाइफरकेट करेंगे। इट मींस इफ एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट विल बी एंटर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, and if it is not affecting the asset liability status it will be entered into revenue account. Okay, अगर आपको ये समझ आया है then only it will be easy for you to bifurcate the areas. For example, if I ask subsidy is given, so it has not affected the asset liability status of the government, and subsidy is given means it is a expenditure, it is a expenditure and it has not affected the asset liability status, तो वो क्या हो गया, revenue expenditure। क्या हो गया जी, revenue expenditure। Now for example, the government has purchased a factory. What does it mean? It has invested money, so it means money will go out, so it is of expenditure nature, and it has created asset, it has created asset for the government, so it becomes capital expenditure. Students, let us get on to another way of classification of structure of government budget. So we would classify it as revenue budget and capital budget. Revenue budget we can also say revenue account of government or the capital account of government. Under revenue budget we have revenue receipts and revenue expenditure. Now let us see the components of these. Revenue receipts can be of two forms or from two forms. It means the sources of revenue receipts can be of two forms. The very first is the tax sources or the tax revenue, other is non-tax sources or non-tax revenue. Revenue expenditure can be either planned or planned expenditure or non-planned expenditure. Please mind my words, it is not planned, it is planned or non-planned. And these planned or non-planned can be either of development expenditure or non-development expenditure. It means the expenditure either it is planned or non-planned, it may be for the purpose of development or for non-development. Next is the capital budget or capital account. Again it has capital receipts and capital expenditure. So capital receipts have majorly four sources, that is the borrowings, second is disinvestment, third is recovery of loans, and fourth is other receipts, right? For capital expenditure, again, like its counterpart of revenue expenditure, we have planned and non-planned. Here also we have planned capital expenditure and non-planned capital expenditure, and both of these expenditures can be either for the purpose of development, so it will be called development expenditure, or for non-development purpose, so it would be called non-development expenditure. So dear students, our next topic is sources of revenue receipts. As we have discussed कि हमारे पास जो गवर्नमेंट बजट है उसमें क्या है, receipts and expenditure। तो पहली बात करेंगे revenue receipts की, उसके क्या क्या sources हैं। So सबसे पहले समझेंगे जी tax revenue या sources of revenue receipt is tax receipts, second is non-tax receipts, वो बाद में करेंगे। पहले समझते हैं टैक्स। A tax is a compulsory payment made by the people। आप हैं और मैं हूं, हम अपनी इनकम पे जो टैक्स दे रहे हैं, या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, या एक कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी, एक बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है, वो एक कंपल्सरी पेमेंट है विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते हमने ये टैक्स दिया, हमें ये बेनिफिट दीजिए, तो हम उसके ल्यू में कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते गवर्नमेंट से। सो इट डज नॉट क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। अब इसमें हम क्लासिफाई करते हैं टैक्सेस को मेजरली टू कैटेगरीज में। द वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट, वो इसकी बात करेंगे। तो पहला आ गया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट टैक्सेस और फिर हम उसके बाद समझेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन का मतलब क्या है, इस बर्डन को समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड टू टर्मिनोलॉजीज, दैट इज द इंपैक्ट एंड द इंसिडेंस।
इम्पैक्ट यहां पर रेफर करता है इनिशियल बर्डन को और इंसिडेंस यहां पर रेफर करता है फाइनल बर्डन को। तो अगर इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्पस पे है तो ऐसा होगा सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस में। इसका मतलब मेरी इनकम और मुझ पे पड़ने वाला इनकम टैक्स, मेरी वेल्थ और मैं जो दे रहा हूं उस पे वेल्थ टैक्स। लेकिन अगर आपका इम्पैक्ट यानी कि इनिशियल बर्डन किसी पे है और आप उसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे बंदे पे, देन इट बिकम्स इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल जीएसटी, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना जरूरी है, लेकिन मैं वो रिसीव कर रहा हूं उस बंदे से जिसको मैंने सेल किया है। फॉर एग्जाम्पल अ डिस्ट्रीब्यूटर, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, वो उससे टैक्स रिसीव करेगा और जो रिटेलर है वो आगे उस कंज्यूमर से टैक्स रिसीव करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो हम जब टैक्स को पार्टली या होलली किसी और पे बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। जब एक इंडिविजुअल अपनी इनकम पे टैक्स देता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। जब एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी अपनी इनकम पे टैक्स देती है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। इंपैक्ट और इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन, जिसकी इनकम हुई वो पर्सन टैक्स देगा। इट मींस बर्डन, हमने क्या पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, एक ही बंदा देगा। अब यहां पे हमें एक ध्यान देना है तीन टाइप्स ऑफ टैक्सेस का, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी एंड गिफ्ट टैक्स। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड अ मेजर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वो ज्यादातर रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, दैट इज व्हाई दे हैव बीन टर्म्ड एज पेपर टैक्सेस। इन तीन टैक्सेस को हम पेपर टैक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए गवर्नमेंट। सेकेंड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन पे, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने इसमें बताया इसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे है, यहां पे इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग है, यानी कि फाइनल बर्डन जो है दैट मे बी होलली और पार्टली शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। क्लियर है जी? अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वेरी फर्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी, ये लगता था ऑन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्नीचर, तो जब मैं फर्नीचर बना रहा हूं, मैं प्लाईवुड बना रहा हूं, तो क्या होगा, मैं उसके ऊपर जो टैक्स दूंगा एज अ मैन्युफैक्चरर दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। सेकेंड इज कस्टम ड्यूटी, इफ आई एम एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, तो उसके ऊपर दिया जाने वाला टैक्स इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। सर्विस टैक्स, इफ आई एम गिविंग सर्विस फॉर एग्जांपल इन होटल्स, if they are giving you home delivery, so that is a part of service tax. Next comes VAT या ad valorem tax, इसको बोलते थे value added tax. For example, if I have a restaurant, I have purchased spices, I have purchased paneer, I have purchased kaju paste, I am converting all that into a particular dish for say shahi paneer, तो क्या होगा, I have added value to it, so it will be charged, so that is called value added tax. Next comes the specific tax. For example, courier parcels. अगर आप कोई गिफ्ट, कोई पार्सल देने जा रहे हैं, कोरियर करने जा रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, साइज और क्वांटिटी इट इज चार्ज्ड अ टैक्स दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक टैक्स। अब हमें यहां पर एक और चीज को नोट करना है कि ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया हैव बीन सबमर्ज्ड इन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब से? फ्रॉम जुलाई 1, 2017। किसको छोड़कर? कस्टम ड्यूटी एंड स्पेसिफिक टैक्स। ये दो टैक्स आज भी जीएसटी से अलग चल रहे हैं, लेकिन बाकी सभी टैक्सेस हमने जो एग्जांपल किए या नहीं भी किए, वो सब टैक्सेस हैव बीन सबमर्ज्ड इनटू जीएसटी basis. The very first was on the basis of tax burden. Now we are on the basis of tax rate, यानी कि कितना रेट परसेंट हमें टैक्स पड़ रहा है। यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस का, तो हम यहां पे देखेंगे तीन वे ऑफ क्लासिफिकेशन। इस टेबल से आपको समझना आसान होगा। द वेरी फर्स्ट इज टैक्स का नाम क्या है, द सेकंड इज द कॉन्सेप्ट एंड द थर्ड इज द एग्जांपल। नाउ फर्स्ट कम्स द प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स सेज इफ इनकम विल इंक्रीज द टैक्स विल इंक्रीज and if income will decrease the tax rate would decrease. Now what does this mean? This means, let us see the example. If your income has increased from 10,000 to 20,000, you will be paying 20% instead of 10%. If means I am earning 10,000, I will pay 10%. You are earning 20,000, you will be paying at 20% tax, 20% of the income. The next comes the regressive tax. Progressive means बढ़ना, regressive means
कम होना. It says if income increases the tax rate decreases, if income decreases the tax rate increases. It means if I am earning rupees 10,000, I will pay tax at the rate 20%, and if you are earning 20,000, you will be paying lesser tax percentage than me, right? The last one comes proportional tax. Proportional tax क्या होता है? आपकी इनकम कम है या ज्यादा, बढ़े या कम हो, but the tax rate would be constant. It means if I am earning 10,000, I am paying at 10%. If you are earning 20,000, you are also paying tax at 10%. See, progressive means income increases, tax rate increases. Income decreases, tax rate decreases. Regressive, income increases, tax rate decreases. Income decreases, tax rate increases. Proportional tax, either income increases or decreases, the tax rate remains constant. We had studied earlier कि जो proportional tax है ये redistribution function of government budget and reallocation of resources में help करता है, and this also acts as a automatic stabilizer. We have studied this in the previous video. So students, as a part of revenue receipts earlier, we have studied the tax revenue receipts. Now we will move on to sources of non-tax revenue receipts. The very first comes the fees. Let's go by the examples. For example, birth certificate fees, death certificate fee. Second comes the license fee. For example, the driving license fee you have paid, or you have taken a license for a manufacturing unit. Third comes the fine and penalties. For example, you are overspeeding a vehicle, you have overloaded a vehicle, you are riding a bicycle, a motorbike without helmet. So you would be given a fine or a penalty, you will be taken it, और आपको उसके लिए चालान पे करना पड़ेगा. Next is the escheat. Escheat is if there is no legal hire of a particular property. For example, एक एक्स पर्सन है, उसकी डेथ हो गई और उसका कोई भी ब्लड रिलेशन में या लीगल हायर उसने विल नहीं लिखी, तो होगा क्या? There is no legal hire, it is an unclaimed property. So government will take a charge on it and it will sell it. तो उसको बेचने के बाद जो पैसा आएगा, that becomes escheat. Next is the forfeitures. आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है, for example, issue of shares. If you do not fulfill the contract, you have applied for particular shares, but you do not purchase it, then the basic amount is, if it is non-refundable, so अब वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट क्या बन जाता है? forfeiture, which is called जुर्माना. इसका मतलब for non fulfillment of the contract. Next is the interest on loan. बेटा, here we need to understand that recovery of a loan is a capital receipt because it reduces asset, but receiving interest on loan is a revenue receipt because interest does not affects the asset or liability status of the government. Seventh comes the special assessment. For example, there is a development activity by the government. Example, sewerage development, or we would say bridges have been or flyovers have been made. Due to that, your property has appreciated. So the value of appreciation, उसका कुछ part can be charged by the government as a development charge, which is called special assessment. Next comes profits and dividends. We have the PSUs, public sector undertakings of the government like Air India, Indian Airways, भारती हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. तो इनसे आने वाले प्रॉफिट या डिविडेंड या जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और फिजिकल एसेट्स, उसको हम लेंगे रेवेन्यू रिसीट्स में. नेक्स्ट कम्स द गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स व्हिच द गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस और एनी अदर पार्टी. The sale of 2G, 3G spectrums. We know we are running today these days in India 4G, right? We are on the verge of introducing 5G. तो जो कंपनीज इस 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम को परचेज करती हैं so that they can sell it to the customers, उसके लिए जो पेमेंट होता है that is also a part of revenue receipt. I hope the whole topic is clear to you. Thank you and have a nice day.